प्लीज भाई बैठ जाइए आप। मिस्टर राजपाल, प्लीज प्लीज। अध्यक्ष जी, प्लीज कंटिन्यू। अध्यक्ष जी, प्लीज मिस्टर राजपाल, डोंट प्लीज। अध्यक्ष जी, प्लीज मैं तो बैठ जाता हूँ। मिस्टर राजपाल, प्लीज resume your place. Please don't. He has not conceded. Please resume your place. Please. अध्यक्ष जी, Please. अध्यक्ष जी, Continue. राज्यपाल अध्यक्ष जी, Please. Please. अध्यक्ष जी, ये अच्छी बात है, ये प्रश्न पूछा गया। इस प्रश्न का जवाब सबको संतुष्ट करना चाहिए कि उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया अपने आप में अच्छी प्रक्रिया होनी चाहिए। कोई एक व्यक्ति या एक पद उसका नियंत्रण न कर पाए। जिस राज्य का उदाहरण दिया, जब सबकी सिफारिशों के साथ, नेता प्रतिपक्ष की सिफारिश के बाद, चीफ जस्टिस की सिफारिश के बाद राज्य सरकार नाम भेजती है, तो 4 वर्ष तक राज्यपाल उसको नोटिफाई नहीं करते। तो ऐसा इंटरप्शन मत करिए जिसमें बहुत उत्तर देने पड़ेंगे। दूसरे दौर में नाम भेजे जाते हैं तो पता चलता है कि बिना मुख्यमंत्री की सिफारिश के राज्यपाल ने नियुक्ति कर दी। Let's not deviate from the subject. भाई बैठ जाइए आप लोग। अध्यक्ष जी, Please don't disturb the discussion. अध्यक्ष कभी वहां पढ़ाइए बैठने के लिए, आप कहाँ क्या बैठता है? अध्यक्ष जी, भाई अध्यक्ष जी, प्लीज रिज्यूम योर प्लेस। बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। अध्यक्ष, Mr. Chairman, प्लीज रिज्यूम योर प्लेस। the manner in which the Raj Bhavan subverted the appointment for years is itself a good case why we must have an institutional mechanism not controlled by a government. Adhyaksh ji, most of us conceptually and ideologically have been supporters of social justice and affirmative action. आरक्षण हो उसके हम समर्थक हैं। और जब मैं ये कहता हूं कि आप ऐसा कानून ला रहे हैं जो संवैधानिक दृष्टि से जिसमें आपत्ति हो सकती है, अब आपने कहा कि लोकपाल 9 लोगों का बनेगा, उसमें आरक्षण होगा नॉट लेस देन 50%। अब सुप्रीम कोर्ट ने 50% की कैप लगाई है और नॉट लेस आप 50 कह दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नॉट लेस देन 50 इसलिए कहा कि 5 होंगे तो एकाएक उसको चुनौती दे दी जाएगी। द लीगल फ्रेजियोलॉजी ऑफ दैट क्लॉज, नॉट लेस देन 50%, is designed to make it at least 5 out of 9 so that it becomes constitutionally vulnerable. I am being forced to enact a law, but I'll enact a law where some friendly person will move the court and have this provision state. Why do you go in for extra constitutional reservations? Go in for reservations which are in accordance with the Constitution. We have no difficulty. All these are designed to make this law vulnerable to a constitutional challenge. Sir, my third ground, sir, is that we had a sense of a House resolution. उस sense of the House resolution में हमने स्पष्ट रूप से ये कहा, और ये राजनीतिक तर्क है, इस सदन की और दूसरे सदन की विश्वसनीयता का प्रश्न है, कि हम प्रावधान बनाएंगे जिसमें C&D को, कर्मचारियों को लोकपाल के तहत रखेंगे, जिसमें हम सिटीजन चार्टर को लोकपाल के तहत रखेंगे। अब द लैंग्वेज इज वेरी क्लियर, लेट मी रीड दैट लैंग्वेज। The language is
of the Finance Minister's statement, this House agrees in principle on Citizens' Charter and lower bureaucracy to be brought under the Lokpal through an appropriate mechanism. अब मैकेनिज्म की फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिज्म का लचीलापन आपके पास है, लेकिन अंडर द लोकपाल का कोई लचीलापन नहीं है, आपने सेंस ऑफ द हाउस में स्पष्ट रूप से कह दिया। अब आप सी एंड डी के संबंध में अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म सोच सकते हैं। You can say the Lokpal will deal with it under his supervision. He can deal with it or a delegate can deal with it. But why do you want to say that it will go outside the purview of Lokpal when it goes to another agency? Why should citizens' charter clauses not have come as a part of this law itself? You have committed to put it under the Lokpal. So too with regard to Lokayukt, when we made a commitment in this, we have to enact, but it has to be done constitutionally in the correct manner. And the correct manner, sir, is that we create an institution which is constitutionally permissible. We can't encroach into the rights of the states and say we are violating those rights, but we are giving a power to the state to reject a central law. If center has jurisdiction, no state can conceivably reject that law. And if center has no jurisdiction, you can't usurp into the authority of the states. Sir, we are creating a new institution. Institution building, sir, is a very challenging task. This will be the primary integrity institution in this country. Are we going to subvert this institution even before it is formed? The manner in which you have brought this law, you want to subvert this institution even before it was formed. You want to kill the Lokpal while it's still in the womb. We need to create a powerful and an independent Lokpal. You want to create a subservient Lokpal. An effective Lokpal needs an independent investigative agency, that's the CBI, or any other agency. You want a pliable agency so that the Lokpal becomes a rudderless institution. The Prime Minister said that there was some conflict between, it indicated in fact, between fighting corruption and federalism, sir. In my respectful view, there is no such conflict. And therefore, if we are in the process of creating history, the challenge before us is, let's not create bad history. If we create bad history, we'll be leaving a lot of tasks for our next generations to correct these errors into which this law is falling. And that is why some of us in the opposition have decided we will be here the whole day to pass a Lokpal bill, but not your Lokpal bill. Please accept the amendment which some of our colleagues have moved so that we can have, with those amendments,